Looking at the emergence and historical development of gender studies as a separate discipline, we see that it has roots in the feminist movement. Feminist movement, as the name shows, a movement which is for the rights of women. This movement emerged and has roots in women's struggle for at least three things. A, education for all, then women's political and other rights, and women's independence and financial decision making. So for many decades and actually centuries, women were struggling for their rights, struggling for a right to access education, to go for education at every level. At the same time, they were struggling for their political rights, the right to vote, the right to take part in political system in the country. And at the same time, they wanted the freedom to make their own economic decisions, financial decisions, and other decisions within the family and outside the family too, at the workplace. Feminist movement or feminist approach is a movement or a way of thinking that proposes, advocates, supports, and struggles for social equality of men and women. The difference between men and women should be looked into from a gender perspective rather than a sexist perspective. So what we are saying here is that this movement does not say, and it never said, that men and women are the same or identical. Of course they are different, but on the basis of these differences, they should be treated on the basis of their gender, the way the society has brought them up, the way their socialization had taken place, and not from a sexist perspective, not on the basis of the biological sex that they were born with. The difference between sexes is learned. It is said by the feminists that it is a difference which has been taught to people. It is learned. It is attained. It has been achieved. It is not ascribed or inherent. This is not a part of the genetic makeup of a person, but this is how the society has shaped the psyche and the personality and the existence of people. Feminists advocate that change is important. All human traits are found in all humans. Everyone should have equal rights and gender stratification should be eliminated. All forms of violence against women need to be curbed and brought to an end. And sexual autonomy is important. So we see that they are talking about the position that people have in the society. They should be treated as equal citizens. दोनों को एक तरह के इख्तियारात देने चाहिए, दोनों को एक तरह से कंसिडर करना चाहिए, और हमें ये जानना चाहिए कि तमाम इंसान जब पैदा होते हैं तो उन तमाम में एक सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, एक सी खुसूसियात के हामिल होते हैं, एक ही तरह के ज़हीन, एक ही तरह के इंटेलिजेंट होते हैं, एक ही तरह के काबिल होते हैं. लेकिन मुआशरा जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग करता है, उसके बाद दोनों मुख्तलिफ तरह के इंसान बन जाते हैं. The earliest active struggle and success of the feminist movement was about suffrage, जो हमें बहुत एक फॉर्मल लेवल के ऊपर और बाकायदा किस्म की मूवमेंट दिखाई देती है, जिसमें हमारे फेमिनिस्ट लोगों ने हिस्सा लिया. वो थी विमेन्स सफरेज मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट जिसका मकसद था कि औरतों को वोट का हक हासिल हो. जो पॉलिटिकल प्रोसेस है किसी भी मुल्क के अंदर, उसमें औरतों को भी हिस्सा लेने की इजाज़त हो. फेमिनिस्ट मूवमेंट was ultimately successful. हम आगे जाके इस बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से विमेन सफरेज मूवमेंट को चलाया गया और किस तरह से जहाँ पे किसी भी जगह पे औरतों को वोट देने का हक हासिल नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि 20वीं सदी में आते आते तकरीबन हर मुल्क में औरतों को वोट देने का हक हासिल हो गया. और जब हम देखते हैं कि औरतों को वोट देने का हक हासिल हो जाए, एंड व्हेन दे आर टेकिंग पार्ट, एक्टिव पार्ट in the political process, then they have access to all sorts of decision making also. जब औरतें वोट दे सकती हैं तो उसके साथ साथ उनको फिर पार्लियामेंट में बैठने का हक भी बहुत सी जगहों पर हासिल हो जाता है,
اور جب وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کو اپنے ملک کے قانون کو وضع کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ فیمنسٹ موومنٹ کے نتیجے میں عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز نے اور اس کامیابی نے اور ان کی دیگر اور بہت سی جو کامیابیاں تھیں، جو انہوں نے لٹریچر لکھا، جن چیزوں کے بارے میں لوگوں میں انہوں نے آگاہی پیدا کی، ان سب کو دیکھتے ہوئے عورتوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے رویوں میں بھی بہت بڑی تبدیلی دنیا بھر میں آئی۔ وہ کہ اس تحریک کا اور اس موومنٹ کا آغاز ہماری دنیا کے مغربی حصے سے یا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس نے ساری دنیا میں اپنے اثرات دکھائے، اور آج عورتوں کا جو مرتبہ ہے یقیناً آج سے 200 برس پہلے کی عورتوں سے وہ مختلف ہے اور بہتر ہے۔